recording. I'm going to share my screen. Okay, Afia, you have a question. Okay, unmute yourself. You have raised your hand. Okay, Afia, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर वो कल मैं ना क्लास नहीं ले पाई थी क्योंकि लाइट चली गई थी तो नेटवर्क भी बंद हो गया था। जी जी। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने क्लास तो कर ली वो जो कल की थी, आप चेक कर सकते हैं? जी, आपने डन किया है तो मैं चलें ठीक है, मैं आपको अलाउ करता हूँ। आप शेयर कीजिए अपनी स्क्रीन, 1 मिनट वेट कीजिए। जी, शेयर कीजिए अपनी स्क्रीन। दिख रहा है? यस आरफिया, शेयर योर स्क्रीन। ओके सर। Okay, so wait, आप म्यूट नहीं कीजिए, अपने आप को अनम्यूट रखिए, अनम्यूट कीजिए। यस, प्ले योर गेम। सर सर जब भी उसके ऊपर आता है ना ऑरेंज के ऊपर तो स्टॉप हो जाता है, लेकिन जब ऑरेंज के ऊपर आता है तो स्पेस को प्रेस करो बार बार जंप होने लगता ओके, सो आप आपने जो कोड इस पे जो है। पोनी वो तो पोनी सर सारे जी, पोनी पे क्लिक कीजिए। जी, वी हैव सेड स्टॉप ऑल। ओके, सो बेसिकली हमने वहां पर इवेंट लगाया हुआ है ना बेटा, वो हमारा जो जी इवेंट है वो इवेंट स्टॉप नहीं होता है। जब भी जो हमारा जो कोड है, जब हमने अगर हमारी गेम ओवर भी हो गई है, बट जब हम वो की प्रेस करेंगे तो वो इवेंट अगर होगा वो जंप करेगा उस चीज को, ठीक है। तो इस चीज ओके को हम हाँ जी, इस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसको कंट्रोल करने का और तरीका होता है, उसमें हम एक्स्ट्रा कंडीशन लगाते हैं, फिर वो जंप नहीं करेगा, ठीक ओके है। सर। और सर ये जो कोडिंग क्लास थी मुझे लगा 10 जून तक होगी। जी, अभी हमारा कुछ टॉपिक्स हमारे रहते हैं, तो अभी हमारी 2-3 क्लासेस और होंगी, ओके सर। ठीक है। कुछ मैं आपको और एक्स्ट्रा चीजें भी आपको सिखाऊंगा, जो आप खुद से वो चीजें आप कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको कोडिंग के लिए कहा था ना स्क्रैप में, लेकिन उसके अलावा मैं यस। आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगा जो आप खुद से चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप खुद से फिर सीख भी सकते हैं फर्दर। ओके, ओके सर। सो स्टॉप योर शेयर नाउ एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। स्टॉप योर शेयर प्लीज। Okay, so now I'm going to share my screen. Okay, Vedant. So last time आपकी असाइनमेंट जो थी वो सेकंड एक्ट जो हमने ऐड किया था यहाँ पर, उसके लिए कंडीशन हमने लगानी थी कि उसको कैसे सेंस किया जाए। तो आप लोगों ने, हर बच्चे ने अपने तरीके से उस चीज को टैकल किया है। ऐसा ही होता है, हर हर किसी के सोचने का अंदाज अपना होता है, ठीक है। तो अब मेरे सोचने का अंदाज जो है वो डिफरेंट होगा। मैं आपको यही काम मैं आपको डिफरेंट तरीके से करके दिखाऊंगा। इसमें हम एक नई चीज भी सीखेंगे। सो हाउ वी कैन ऐड another condition for that. So beta,
अब हम क्या करेंगे, हम ऑपरेटर्स में जाएंगे। ठीक है, ऑपरेटर्स में हमारे पास यहां पर एक ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड और। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, एंड ऑपरेटर है, उसके नीचे है यहां पर और। इसको मैं यहां पर ले आता हूं। अब इसमें क्या होता है, इस ऑपरेटर के जरिए हम दो कंडीशंस पुट कर सकते हैं। हम दो कंडीशंस पुट कर सकते हैं, और दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन अगर हो तो क्या हो जाएगा, वो कंडीशन के अंदर जो ब्लॉक्स रखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास भी सिनेरियो यहां पर ऐसा ही है। हमारे पास टू डिफरेंट एग्स हैं, दो डिफरेंट स्प्राइट्स हैं। अगर चिक दोनों में से किसी एक को भी टच करे तो क्या हो जाए, हमारी गेम स्टॉप हो जाए। तो अब इसी और ऑपरेटर को हम यूज करके हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। अब मैं करूंगा क्या, मैं इसको यहां से पिक करूंगा, ये जो मैंने यहाँ पर टचिंग एग रखा था इसको मैं पुट कर दूंगा वन साइड पर। यहाँ पर हम टू डिफरेंट कंडीशंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन मैंने यहाँ पर लगा दी। अब मैं इसको कर रहा हूँ राइट क्लिक और इसको करूंगा डुप्लीकेट। इसी कंडीशन को मैं यहाँ पर इस साइड पर रख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, टचिंग एग बट एग टू। अब यहाँ पर आप देखिए, टचिंग एग और टचिंग एग टू, तो ये हमारी दो कंडीशंस एक ही जगह पे हो गई। अब इसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा इफ कंडीशन के साथ, और ये हमारा दोनों एक्स के लिए काम करेगा। ठीक है, अब हमारी कंडीशन किस तरीके से हो गई, इफ टचिंग एग और टचिंग एग टू। तो हमने और ऑपरेटर को यूज किया। और ऑपरेटर क्या करता है, अगर दो कंडीशन है हमारे पास तो उसमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो इफ कंडीशन के अंदर रखे हुए ब्लॉक्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, वो अपना रिजल्ट शो करेंगे। ओके, तो यहां पर अब हम इसको चेक करते हैं। ओह सॉरी, ये देखें सेकंड एग के साथ जैसे टच किया तो मेरी गेम जो है यहाँ पर ओवर हो गई। ठीक है, फर्स्ट एग के साथ भी ओवर हो रही थी और सेकंड एग के साथ भी ओवर हो रही है। ओके, सो ये एक मेथड है जिसके जरिए आप लोगों ने अपने तरीके से सॉल्व किया था, लेकिन मैंने जो यहाँ पर परफॉर्म किया है सिंपलेस्ट वे, यानी कि अपने कोड को सिंपल रखा है, बिल्कुल एक ही कंडीशन के अंदर दोनों चीजों को हैंडल कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक ही ऑपरेटर होता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर, इसका भी फंक्शनलिटी मैं आपको बता देता हूं, यहां पर अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं इसको। एंड में हम दो कंडीशंस अगर हमने रखी हैं तो इसमें क्या है कि दोनों कंडीशंस अगर ट्रू हों तो फिर ही उसके अंदर जो इफ के अंदर ब्लॉक हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, सो और में और एंड में ये सिंपल जस्ट जैसे हमारी लैंग्वेज में भी, इंग्लिश लैंग्वेज और उर्दू में भी, और या, ठीक है, तो उसी चीजों के कि अगर चिक टच कर रहा है एग वन को या एग टू को तो फिर क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो एंड में होगा, एंड हम कहां पर यूज करते हैं, जहां पर दो कंडीशंस हमने चेक करनी हो और दोनों की दोनों ट्रू हो तो फिर ही हमारे जो ब्लॉक्स हैं वो एग्जीक्यूट हों। ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा यहाँ पर हम क्या करना है, हमने साउंड ऐड करनी है। तो कुछ बच्चों ने खुद से साउंड ऐड कर भी ली थी, वो हम कैसे करेंगे आप सब देख लीजिए। हम साउंड्स में जाएंगे और यहाँ से हम ब्लॉक सिंपली यूज कर लेंगे स्टार्ट साउंड, और यहाँ पर ऑलरेडी साउंड जो है इंपोर्टेड है, दैट इज अ चिप साउंड। मैं यहाँ पर सबसे टॉप पर यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। व्हेन स्पेस की प्रेस्ड, तो सबसे पहले ये क्या होगा, साउंड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद हमारा चिक जंप करेगा। अगर मैं ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करता हूं, ठीक है, सो हमारे साथ में जो स्प्राइट है वो साउंड भी जनरेट करेगा। ओके, आप सब भी इसमें साउंड ऐड कीजिए, जिन्होंने नहीं की हुई साउंड ऐड उसमें साउंड ऐड कीजिए, कम ऑन जी। हाउ टू सेट स्कोर, यस तहमुल, अभी नेक्स्ट हमने वही करना है कि स्कोर हम कैसे पुट करेंगे, हाउ वी पुट द स्कोर। सर माय चिक इज नॉट जंपिंग,
Okay. So Huzefa Sultan, your chick is not jumping. Okay. So मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, बेटा आपकी स्क्रीन आप शेयर कीजिएगा अपनी स्क्रीन. हुजैफा सुल्तान, शेयर योर स्क्रीन प्लीज. हुजैफा, share your screen please. Yes, हुजैफा सुल्तान, मुझे आप सुन रहे हैं? अनम्यूट कीजिए और अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए. हुजैफा, please share your screen. So you are taking class in a mobile, so how I can check then? Huzefa, okay. So you have to share your script, the screenshot of your script on my WhatsApp, okay? So I'm going to share my screen again. So now we will now have to put the code to calculate the score. तो इसमें कुछ बच्चों ने इसको ऑटोमेटिकली खुद से ही परफॉर्म कर लिया था. सर, योर वीडियो हैड अ लिटिल प्रॉब्लम. इट शोड एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग नाउ. Arfia Fatma, so done. It showed everything that you are now doing. Okay, so students, now we have to put the score, how we can calculate the score. So first of all, we will create a variable and we'll say make a variable and name it score. ठीक है जी, यहाँ पर हमारा टिक होना चाहिए और हमारा स्कोर यहाँ पर नजर आएगा. ओके, so first of all we have to set our score. When our game starts, it should set to the 0. So we'll put it over here, set my variable, but we have to select the variable score. Okay, so first of all, we have to set our score to 0. So when our game starts, it should set to 0. Then we have to put the code to increase our score. So how we can increase our score? So it's very simple. Just we'll use the change block and put it over here. When our chick jumps over it, so our score will change by 1. Okay, so change score by 1. When our chick jumps over it, so it will change score by 1. So now we are checking it. Okay, so you have to put the code change score by 1 over here and it will work. Yes, come on, isko complete kijiye, shabash. When you have finished, so type done in the chat box. Hamza done, Minal done. Okay, Mohib, Minal, Hamza, okay. Yes, come on guys, come on. कंप्लीट कीजिए स्कोर को और मुझे चैट बॉक्स में बताइए अगर आपने डन कर लिया तो. देन वी विल मूव फॉरवर्ड. डन, ओके.
Yes, Arfia, good job. You have already done it. Okay, students. So यहाँ पर हमारी ये गेम चिक गेम भी यहाँ पर हमारी ये कंप्लीट होती है। इसमें हम बहुत सारी और चीजें भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने सिर्फ एक इनिशियल स्टेज पे बेटा इसको कंप्लीट किया है। Now you have to think about it, how you can add further more obstacles in it. You can add more obstacles in it. Okay, आप इसमें और बैकड्रॉप चेंज कर सकते हैं। सर्टेन स्कोर हो जाए तो फिर बैकड्रॉप चेंज हो जाए। सो यू कैन इंक्रीज द स्पीड of the obstacles after certain score. Yes, Arfia, unmute yourself. What is your question? सर वो जो मेरा मेज वाली गेम थी, जी, मेरी मेज वाली जो गेम थी, मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम हो गई थी, उसका मैं क्या करूं? वो जो गेम ओवर होने के बाद भी जंप कर रहा है। नहीं सर, वो मेज वाली गेम। हाँ, मेज वाली गेम है बेटा, क्या प्रॉब्लम है उसमें? सर इसकी एक प्रॉब्लम आई थी कि जिसकी वजह से ना पूरी स्क्रीन हो गई थी ब्लैक सी, और फिर जब वापस आई ना तो बिल्कुल सब कुछ खाली हो गया था। अच्छा, तो सर वो मेरी कंप्लीट नहीं है, उसका क्या करूं? तो बेटा वो आपको अगर सारा वो नहीं दोबारा आपको मिला तो आपको दोबारा से वो कोड लिखना होगा ना। तो सर आपको मैं पूछी थी, अभी क्लास में टाइम है तो आप थोड़ा समझा देंगे? बेटा क्लास में देखें ना, सारे स्टूडेंट्स का टाइम है ना यहाँ पर, तो आपको फिर सेपरेट में मैं जूम सेक्शन में आपको 5 या 10 मिनट्स लगेंगे, या फिर आप वो वीडियो देख लें जो हमारे जो लेसन 2 है, लेसन 2 and 3। ठीक है, वो वीडियो आप देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन होता है तो फिर आई विल गिव यू स्पेशल टाइम। ओके, सो यस अहमद, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर आपकी स्क्रीन कैसे मूव हो रही है? जी, ये एग्स आगे कैसे आ रहे हैं? एग्स आगे कैसे आ रहे हैं? यस सर। बेटा इसके लिए कोड लगाया है ना हमने यहाँ पर, एग्स एग्स स्प्राइट के ऊपर कोड लगा हुआ है, देखिए। आपने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी अहमद? नो सर। हाँ, तो बेटा इसी वजह से ना आपको नहीं है इसमें। तो ये हमारे पास एग स्प्राइट, रिकॉर्डिंग। जी कल की रिकॉर्डिंग मैंने शेयर की हुई है ग्रुप में, आप उसको चेक कर लीजिए, तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझ जाएंगे आपको। ओके ओके ओके, नाउ म्यूट योरसेल्फ नाउ। ओके, सो मैं बात कर रहा था कि बेटा हम इसमें यहाँ पर और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 एग्स हैं, आप और भी इसमें थर्ड भी इसमें ऐड कर लीजिए, और स्कोर की कंडीशन पे आप फिर बैकड्रॉप चेंज कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारी ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हर किसी की अपनी सोच है, उसको किस तरीके से आपने, ये मैंने आपको इनिशियली आपको मैंने बता दिया कि आप किस तरीके से। अबीहा अली, यू हैव अ क्वेश्चन? ओके अबीहा, सो वेट, आई हैव टू अनम्यूट यू। अबीहा, यस, अनम्यूट योरसेल्फ। यस अबीहा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? जब आउट हो रहे गेम में तो ये दोबारा से नहीं आ रहा, स्कोर 0 से नहीं आ रहा। स्कोर 0 से नहीं आ रहा? अच्छा, अब इसमें देखें बेटा, देखें आपने ये ब्लॉक रखना है कहाँ पर, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक कर सेट स्कोर टू 0, ये यहाँ से वेरिएबल में से आपने ये ब्लॉक पुट करना है, सेट माय वेरिएबल टू 0। सो यहाँ से आपने माय वेरिएबल की जगह पे आपने क्या कर देना है, स्कोर, सेट माय स्कोर टू 0। तो जैसे ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे तो ये 0 से स्टार्ट होगा। ओके ओके so okay students, so we are now moving forward and okay, so अब नेक्स्ट, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर पता है कि वो गेम किस तरह, या अपना जो प्रोजेक्ट है वो आप किस तरीके से सेव कर सकते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो किस तरीके से आपने ये सारा अपना प्रोग्राम लिखा है, इसको आप अपने कंप्यूटर पे कैसे सेव कर सकते हैं, इसको आप समझ लीजिए। वी विल क्लिक ऑन द फाइल, ओके,
एंड यू विल गेट 3 ऑप्शंस ओवर हियर। मेरे पास यहाँ पर 5 ऑप्शंस आ रहे हैं, आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से कौन सा ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है? सेव टू योर कंप्यूटर, ठीक है। आप क्या करेंगे? ऑप्शन सेलेक्ट सेव टू योर कंप्यूटर, इस पे हमने क्लिक किया और इसके बाद ये हमसे पूछेगा जी आपने इसको कहाँ पर सेव करना है और इसका नाम क्या रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका नाम मैंने रख दिया चिक गेम बैच 1 और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा सेव पे, तो मेरी ये गेम जो है वो ये मेरा प्रोजेक्ट है मेरे कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा और वहां पर सेव हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा सेव हो गया है, मैंने इसको ओपन करना है, तो कैसे करूंगा? अब नेक्स्ट टाइम जब मैंने ओपन करना है तो सबसे पहले मुझे स्क्रैच ओपन करना होगा। उस फाइल को डबल क्लिक करने से आपकी वो गेम ओपन नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्क्रैच में आ जाएंगे। इस तरीके से आपके पास स्क्रैच ओपन हो गया। अब आप क्या करेंगे? फाइल में आएंगे, देन यू हैव टू सेलेक्ट लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। क्या सेलेक्ट करेंगे आप? लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो इस पर क्लिक करेंगे और इसी तरीके से डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने सेलेक्ट कर लेना है कहाँ पे आपने सेव किया था। मैंने डेस्कटॉप पे किया था और उस फाइल को मैं लोकेट कर लूंगा। उस फाइल का नाम था मेरा चिक गेम बैच 1 और मैंने किया ओपन। तो अब यहाँ पर नाउ इट्स लोडिंग। जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था वो मैंने सेव किया था, अब ये दोबारा मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितने भी प्रोजेक्ट्स आप अपने बनाएंगे उनको आपने अपने कंप्यूटर पे सेव कर सकते हैं आप। Okay, so who has the question? Sir, can you share the code for egg? Muhammad Umar, you have to go through the recording of the previous lesson, please. Abiha, 820, okay, Abiha has done. So, yes, Arfia, what is your question? सर वो सेव तो हो जाएगा, लेकिन मेरे पास ना मेरे बाबा ने इस क्लासेस से पहले एक ऐप करके दी थी एमब्लॉक। तो जब भी ओपन करती हूँ तो एमब्लॉक पे खुलती है, लेकिन इस पे सेव करनी पड़ती है। ये फाइल, ये नाम के साथ फाइल के साथ एक ऑप्शन आता है सेव प्रोजेक्ट का कभी कभी। बेटा उसको डबल क्लिक करके आप ओपन नहीं करेंगे उस फाइल को। ओके सर। ठीक है, क्या करना है अपने स्क्रैच, पहले आप स्क्रैच ओपन कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। स्क्रैच में आके फिर आपने करना है फाइल और लोड फ्रॉम कंप्यूटर, फिर आप उसको ओपन करेंगे। ओके टीचर। yes, Hamza, Muhammad Hamza, what is your question? Unmute yourself. Yes. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक चेक कीजिए अपना प्लीज। नहीं बेटा नहीं आवाज आ रही आपकी। यस फातिमा एंड आयजा, अनम्यूट योरसेल्फ। व्हाट इज योर क्वेश्चन? यस फातिमा। स्क्रैच में लोग सॉरी खुद से बेटा आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, दोबारा बोलिए फातिमा। स्क्रैच में तो आपसे बेटा आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। यस मीनाज। ओके। If I have to change the backdrop, so how I can change the backdrop when the score is equal to 10? So, okay, so I'm going to show you how you can change the backdrop. So wait a minute, I have to take one more question. Okay, I'm going to show you how you can change the backdrop after certain score. Okay, yes, Ahmad, unmute yourself. Sir, when I'm trying to save it, it's saying that it is very getting confused. I'm getting confused. Can you
show how to save this project. Okay. Okay. So mute yourself. So how you can save your project? I'm going to explain it again. Go to the file, and we have the option save to your computer. Okay. Click on it, and you will get a dialog box. You will get a dialog box, and here we have to give the name. फाइल नेम में आपने फाइल का नाम देना है, किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं, और लोकेशन आपने देख लेनी है कि आप किस जगह पर इसको सेव कर रहे हैं। डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, डाउनलोड्स में जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स में जा रहा है, या कहाँ पर सेव हो रहा है। ठीक है, ताकि आप जब इसको दोबारा ओपन करें तो आपको मालूम हो कि आपने कहाँ पर सेव किया हुआ था। तो इस तरीके से बेटा आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन वाज हाउ वी कैन चेंज द बैकड्रॉप इफ score reaches to 5 or something else. So we'll put the green flag click over here, or we can simply put the condition inside this one. So we'll move to the controls. We'll pick this block, if then block. Okay, and we'll put it inside this forever. Inside this forever. So this is a forever. This is the first condition, and this is the second condition. Now, so I am going to put the condition. So that is if score equals 0. So I have to go to the operators, and we have to pick this block equal. Okay, we'll pick this block and put it over here. And here we have to say score, if score. So we'll move to the variables, and we'll pick the score from here. If score equals what? So if score equals, let's say, I'm going to say if score equals 5. I'm going to say if score equals 2. If score is equals to 2, then what I have to do, I have to change the backdrop. So first of all, I have to load another backdrop into my script. So for that, I have to go to choose a backdrop from here, and then I'll select another backdrop for my game. Okay, so I'm going to say like this, so blue sky 2. Okay, so now what I have to set is I have to go to the looks. Inside the looks, we have a block switch backdrop to. Okay, so this one. So I have to put this block first of all over here when my game's going to start. So it will start with a blue sky. Okay, so then the condition is true when the score is equals to 2, then it should change to blue sky 2. So I'll select the blue sky 2. So now when my game will start, it will start from the blue sky, and when it reaches to 2, so actually my game is going to over. So okay, so if I'm going to play it again, sorry, so let's try it again. Oh, so my computer, my laptop is also recording at the moment and playing and transmitting, so my computer has no space. So you have to select the other drive. If you have no space on C drive, you can select the D, E, or F, any other drive you have available. Okay, so मैं यहाँ पर कंडीशन आसान कर देता हूँ, मैं 1 कर देता हूँ कि हम यहाँ पर मेरा कंप्यूटर स्लो चल रहा है बहुत, तो when it jumps over, okay, again. Sorry. So आप इस चीज को इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे when score is equals to 1, so switch backdrop to blue sky 2, तो आपका यहाँ पर बैकड्रॉप चेंज हो जाएगा। बट इस टाइम पर वो कंडीशन अकर नहीं हो रही है, कंप्यूटर मेरा बहुत स्लो चल रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है लेसन की और हमारी जूम मीटिंग भी चल रही है, तो इस वजह से यहाँ पर वो परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ओके, सो आर्फिया, यू हैव अ क्वेश्चन? ओके, यस, अनम्यूट योरसेल्फ। सर मैंने तो ये स्कूल वाली साइड नहीं की, ये कर लो मैं? जी बेटा, yes, repeat your question again.
कि जो आपने स्कोर 1 लिखा हुआ है। बेटा आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैं क्या आ रही हूँ? आरफी अपना मैसेज आपका चैट बॉक्स में टाइप कीजिए प्लीज। यस मिनाल। मिनाल अनम्यूट योरसेल्फ। My check is the check direction is in 90. Is it not 90 degree? Is it showing that the direction is 90, but in the screen there is not? So can you share your screen? Okay. So I am going to allow you to share. Please wait a second. Okay, now share your screen, please. Okay, so you have set your direction to 90. Okay, click on the direction equals to 90. Just click on the green flag. Okay, now click on the direction, please. Click on the direction at the bottom of the page. Okay, so actually your costume has been switched. Okay, click on the costumes, please. Costumes, click on the costumes. Yes, you have selected the check that is picking something from the ground. So you have to select the first one. Click on the first one. Okay, now it's perfect. Okay, now click on the code and it will work fine. Okay, now stop your share, please. Okay, so is there any question with anyone? Okay, Ahmad, it's your turn. So Ahmad. Yes, Ahmad. Sir, can you show the egg controlling blocks for some time? Okay. Can I do it on a laptop? Okay, so I am going to share my screen. So we have only 1 minute left. So here is the code for the egg. We have only 1 minute left for. Okay, students, जो students previous lessons जिन्होंने जो miss किए हैं वो kindly recordings check कर लें. अगर किसी के पास कोई recording नहीं है तो वो मुझे WhatsApp पे contact कर सकता है. मैं उसके साथ recording share कर दूंगा. Okay. So you have to complete these all 3 games